application of derivatives, application of derivatives. Ready? This chapter, but application of derivatives, it is comprising of 9 marks with the option. The chapter is comprising of the weightage 9 marks, highest weightage 9 marks with चलो रेडी एंड नाउ स्टार्ट आंसरिंग। बड़ा हम लोग ने ये जो चैप्टर है डेरिवेटिव्स, ये तो बड़ा हम लोग ने पढ़ लिया है ना। और पूरा चैप्टर बड़ा कंप्लीट करने के बाद अब कहीं ना कहीं बड़ा दिमाग सोच तो रहा है बड़ा कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग द चैप्टर बड़ा डेरिवेटिव्स, राइट। अपना जो दिमाग है बड़ा वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है ना बड़ा कि सर ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स, सर ये टॉपिक का यूज क्या है। तो सी हियर आई विल explain. But when you people have selected the term, you have you have selected the field बड़ा commerce बड़ा, तो तुम्हें पता होना चाहिए बड़ा कि what is the meaning of the term बड़ा commerce means. commerce जो होता है बड़ा commerce means बड़ा it is a business. क्या होता है बड़ा commerce means it is a business बड़ा business, right. Suppose after completing बड़ा with your studies you are starting बड़ा with your own business. Let we assume that बड़ा कि you are having your own manufacturing firm बड़ा, बराबर। तो अब मुझे ये बताओ बड़ा कि being an entrepreneur or being a businessman बड़ा, what should be your main motto. Correct, your main motto बड़ा it should be to earn the profit बड़ा, right. So in order to earn a profit बड़ा it is compulsory है ना, it is compulsory बड़ा कि you should know that कि in a one day or बड़ा in a 1 week or बड़ा in a 1 month or in a 1 year my company should manufacture how many number of units बड़ा. My company should manufacture बड़ा how many number of units बड़ा, so that the company will earn a maximum profit. The company will earn a maximum profit. तो how we will get that answer, ये हमें कैसे पता चलेगा. Simple, by with the help of derivatives, with the help of derivatives, by using the fundamentals of derivatives, you can find out or you can know that in a 1 day or in a 1 week or in a 1 month है ना, your company जो है should manufacture how many number of units. नेक्स्ट बड़ा तुम्हारे कंपनी का जो रेवेन्यू है बड़ा, रेवेन्यू वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए. तो अगेन द सेम बड़ा है ना, रेवेन्यू इज बेस्ड अपॉन बड़ा द नंबर ऑफ आइटम्स बड़ा, रेवेन्यू इज बेस्ड अपॉन बड़ा
the number of items which are being produced, or it has been based upon the output. So again, in that case, you know, you should know that in a one day, or in a 1 week, or in a 1 month, what should be your company's output, so that the revenue which has been generated by your company, it should increase. So answer to that question, it can be obtained with the help of the chapter which is called to be as application of derivatives. अच्छा, बड़ा तुम लोग क्या चाहोगे कि तुम्हारे कंपनी के बनाए हुए जो गुड्स है, कंपनी के बनाए हुए जो गुड्स है, उसकी मार्केट में डिमांड जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। बट जो डिमांड है डिमांड डिमांड किसके ऊपर बेस्ड है? डिमांड इज बेस्ड अपॉन द प्राइस. More will be the price, less will be the demand. Less will be the price, more will be the demand. Because we know that the price and demand, both of them are inversely proportional to each other. Yes or no? अच्छा, प्राइस एकदम ज्यादा रखा तो कोई उसे बाय नहीं करेगा. एकदम कम रखा तो कंपनी विल हैव टू सफर द लॉस. तो कंपनी शुड कोट द ऑप्टिमम प्राइस. कंपनी जो है इट शुड कोट द ऑप्टिमम प्राइस. ऑप्टिमम प्राइस समझ में आया सब? तो व्हेन आई से दैट द कंपनी शुड कोट द ऑप्टिमम प्राइस, तो वो ऑप्टिमम प्राइस क्या होगा? हाउ वी विल कम टू नो दैट? तो बट सिंपल, विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. अच्छा देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली. Between the income and expenditure of the family. So we know that income and expenditure, both of them are directly proportional to each other. As the income of a person, it will go on increasing. The demand, sorry, not demand, the expenditure of that person will go on increasing. सब लोग बेटा एग्री करते हो? yes or no? More will be the income, more will be the expenditure. Less will be the income, तो बड़ा less will be the expenditure. तो बड़ा यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द बड़ा इनकम, प्रोपोर्शनेटली बड़ा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स कितना होना चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए. तो हाउ वी विल कम टू नो दैट देयर शुड बी हाउ मच सेविंग्स एंड देयर शुड बी हाउ मच ऑफ द एक्सपेंडिचर? ये बात कैसे पता चलेगी? सिंपल विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एंड सपोज इफ वी वांट टू फाइंड द equation of a tangent and equation of normal. So that equation of a tangent and equation of a normal that can be obtained with the help of application of derivatives. So in this given chapter we are going to study about the 5 important applications, and that 5 important applications which we are going to study, they are random. The first application which we are going to study it is called to be as maxima and minima.
second application beta which we are going to study beta. Okay, beta, it is called to be as beta increasing and decreasing. Number 3, we are going to study about beta elasticity of पढ़ाई के लिए demand. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Demand beta. Number 4 beta which we are going to study beta is marginal propensity to consume and marginal propensity to savings. Fourth is equation of tangent and equation of normal. Okay, madam. These two applications madam, which we are going to study madam. You check करो madam, you have studied this elasticity of demand madam, and marginal propensity to consume and marginal propensity to savings. इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम लोग ने? ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा, ये पढ़ा है कि नहीं सब? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, है ना? ये 5 एप्लीकेशंस बड़ा अगर तुम लोग ने पढ़ लिया तो समझ जाओ बड़ा ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया। चलो बड़ा, आउट ऑफ विच we are starting with
one of the application which is called to be as marginal propensity. Marginal propensity marginal propensity to consume and marginal propensity to savings. Ready? And now let me start with next one. By leaving the two finger space, यहाँ पे E e to the base c if e to the base c is a consumption expenditure. If e to the base c if e to the base c is a consumption expenditure and x is the income of a person and x is the income of a person and x is the income of a person. Then then starting with first number one Rick. Then marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. But when I'm using the word marginal, the word marginal, it refers to a derivative. It is a derivative of it is d by dx of EC. तो जैसे कि बेटा अपने को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आंसर इज dy upon dx. So on that same basis derivative of EC with respect to x answer is it is dEC upon dx. dEC upon dx. Next, average propensity
to consumed. But when I am using the word average, the word average, it refers to ratio. It is the ratio of consumption expenditure to the income. It is the ratio of consumption expenditure to the income. चलो ये हो गया मैडम with respect to MPC and APC. Next, leave one line and write down if S is the savings, if S जो S is the savings of a person, madam. If S is the savings of a person, madam, then चलो बच्चा लोग मुझे बताओ मैडम, when we are talking about the term savings and the income is X, then the marginal propensity to savings, which is equal to चलो सब लोग रिकॉल करो तो वर्ड मार्जिनल, the word marginal will refer to derivative. It will be the derivative of savings with respect to income. But a derivative of S with respect to X, answer will be equal to